Yes, Saurabh, we can start now. Yes, good morning to all. I welcome you to the 152nd webinar of Saturday webinar series. I am Saurabh, working at Manage. Our Center for Innovation and Agripreneurship is a center of excellence in agribusiness incubation hosted at Manage Hyderabad. It is one of the leading agribusiness incubator centers in India. We have incubated more than 500 entrepreneurs and 310 startups from various focus areas related to agri and allied sector, like animal husbandry, fisheries, dairy, and etc. The topic for today's session is empowering agri startups through microfinance, funding opportunities, and strategies. We have two speakers joining us today. So first, I will introduce Mr. Vikrant Pamani, who is co-founder of Krishifin, and he has more than 17 years of experience with a diverse background in banking, financial product development, etc. He has also worked in organizations like HDFC Bank, Irani Capital, and NetFM, where he has consistently demonstrated leadership and expertise. With this short note, I will like to take over the session. Thank you. Thank you, Saurabh, and thank you, Manage and Team CIA, for giving us this opportunity. And good morning to all the participants. Right. So the topic for today is empowering agri startups through microfinance, and what are the opportunities and strategies? How together microfinance can work with agri startups. Right. So. Basically, I will cover the broader topic of microfinance to give the audience a general overview of basically what is microfinance and what is the ecosystem around microfinance, right? So microfinance is basically small ticket loans which is given to people who otherwise are left out of the financial credit ecosystem, right? And these are the loans which are given to people who can utilize these loans for various income generating activities or various can fulfill their various credit requirement, right? So that's microfinance. So in the ecosystem around microfinance, so we have microfinance happening in India from a long period of time now, and NABARD, which is the pivotal institute which has helped and supported all the ecosystem players to grow this sector, right? So there are consumers or borrowers, predominantly women, right, who are in this ecosystem. Then these women's form self-help group, and in some cases men's also form JLG, which is joint liability group, and these are funded typically by microfinance institutions. So these microfinance institutions are regulated entities by RBI, Reserve Bank of India, and they are in the business of facilitating credit to these SHGs or JLGs. Then there are banks who either fund directly these SHGs or JLGs or fund these microfinance institutions, right, to on lend it to these SHGs and JLGs, right? The key point here is how the SHG bank linkage program, which was started by NABARD years back, has helped to grow this sector, wherein banks started to create saving accounts of these SHGs, and then through the bank linkage program, credit was also enabled, and then it transitioned also to the JLG model. Then because there is credit and there is different kind of risk these consumers or borrowers face, there were insurance companies wherein the concept of micro insurance also came in, right? And various insurance product are channelized through this ecosystem to the end borrowers, right? And then there are regulators, there is RBI, there is NABARD,
there is a self-regulatory organization of these microfinance institutions, right? So these are the ecosystem players. So as an agri startup, we all need to understand, before we, dwell into more of it, or who are the ecosystem players, how they are interconnected, and how is the value chain, which we see, in the microfinance ecosystem. And then we can, based on this understanding of this ecosystem, right, we can look at what are the opportunities, how agri startups and microfinance, can come together and help our end, user, who is basically the farmer of India, right? So that's broadly about the ecosystem. Now I will go to the basically what is the social capital, which as an agri startup, which we need to learn and understand from this sector. So the social capital is basically the SHG and JLG model, right? See, all this microfinance was possible because it is unsecured credit, right? It is given without any kind of collateral, right? Or any kind of mortgage or any kind of security, right? So basically, what was the security in this was basically the social capital, right? The social capital between the members of these SHGs and JLGs, right? And this is very important point to understand, because based on the same point, agri startups can look at microfinancing as an opportunity and as a partnership model, and how both of them can work together. This is the essence. The social capital model of SHG and JLG is the essence, of the strategy of partnering with microfinance institutions, right? So in order to go deep into this social capital, right, which is enabled, which enables this institution to deliver savings and credit products to SHG and JLG. What is that? So basically, if you look at self-help groups and JLG, they are, conceptually they are different. Self-help groups are typically, homogeneous group of rural people, predominantly women, right, who first come together as a, they know each other and they come together to, save some amount of money, right? So, and they kind of create a kitty out of it, right? Out of that saving. And to create an more bonding and trust between the members, credit is enabled to each of the members out of that kitty, right? Uh, because this social capital, this trust, this habit of saving is created within that self-help group, right? Credit can be topped up to meet various credit requirement of the group together as a group, or of the individuals who are part of the group, right? And this is pretty important again from a agri startup perspective, right? Just to give an idea, like some of these groups are also doing some micro businesses which are related to agri, right? For example, some groups come together in villages and create a micro processing plant of, let's say, turmeric powder, right, which is done from uh, uh, turmeric. Amit sir, you were saying something? Or is it no, okay, okay, fine. So Carry on. these are income generating activities which are done by this group, and they might need credit for it, right? Now agri startups, if they can form such groups and take it to microfinance institutions, and agri startups who are in the processing sector, right, who are into primary processing, want to create a sourcing model on the ground level. These groups can be a huge source wherein they can create sourcing model on ground level from various farmers, and this group can primarily process it for you, and then you can buy from them, right, to market it in the larger part of the world, right? Now, all this, may need credit, and that's where the role of microfinance comes in, right? So that's about SHG, which starts with basically a saving-led model and moves to a credit-led model, right? And then there is JLG. So JLG is basically these are informal groups, right? But
again form on a mutual guarantee model, right? So each one of the group member guarantees each other, right? So the group has come together to give guarantees, right? And JLG model was formed basically to enable loans to smaller groups, 4 to 10 people, right? Either they can avail that loan individually or through the group of mechanism again. But predominantly it was used in the situation wherein the saving was not there, and farmers who don't have land as a collateral, right? There are tenant farmers or there are sharecroppers, right? So how do they avail credit? So NABARD came up with this and they formed a concept of JLG, and then wherein a sharecropper or a tenant farmers together can come together and avail credit. Now this is a very good model wherein at many times direct funding to an individual farmer may not be possible because he's a tenant farmer or a sharecropper. So this group model enables that again, right? And there might be many situations wherein startups are, agri startups are selling some, small equipments or some, again doing small processing with this, and they can, club together these farmers form that JLG and enable microfinance, right? So that both of them win, right? The farmer gets, or the group of farmers, JLG gets the credit, and the agri startup can enable their service or product through this channel, right? So as I said earlier, the common thing in between this is the social capital within that group, and that's where agri startups can leverage it, build over it, and partner with microfinance institutions, right? So going forward, just to give some numbers, what's the size of the opportunity for even agri startups to look at, and that market is growing, right? So today there are about, in the SHG model, there are about 14 crore families in India which are linked, about 119 lakh SHG groups, which is huge in itself, right? They have a cumulative saving of a whopping 47,000 crores. Out of that, about 34 lakh SHGs are credit links, and close to 1 lakh crore has been disbursed through it till last year, March 22, right? Now, in the last, we'll take questions at the end. I think Mr. Sonu Sharma has some questions, right? So, there's a huge potential there for agri startups to tap into, and they can also support the microfinance institutions by creating more number of SHGs, right, or more number of JLGs. Similarly, the JLG model, which started later, has 188 lakhs JLGs of landless and tenant farmers. Close to 3 lakh crore plus has been disbursed through this model. These are all NABARD numbers, right? So the opportunity size is huge, and this is a model which probably agri startups can leverage to enable funding to their customer base, or increase their customer base through this model by partnering with microfinance institutions. So and coming to the partnership strategy, right? So as I said, the agri startups need to look at what is the need for each other, right? What are the complementary resources they can provide to microfinance institutions, right? So that microfinance institution can partner with them, right? Obviously, microfinance institutions bring funding and their experience of how to give credit to these SHGs, right? And the whole partnership model has to be based around what are the core strength of each partner, right? For example, I'll again take the turmeric processing example, right? Microfinance institutions are in the business of, or in the process, or in the their focus is to give, nurture a SHG or a JLG and give credit to it, and then collect back again, give credit, and move those cycles smoothly, right? That's their core focus, right?
they are not in, let's say processing or, output linkage, or let's say, creating new income generating activities, right? That's where the core strength of agri startups, which are, working on the ground for income generating activities or for some primary processing or from some output procurement, right? They can, bring in that value, right? Microfinance institutions can bring in, their expertise on lending and collecting, right? And both of these, if they come together, a critical problem of, increasing or, income on the ground level, or as we say, doubling of farmers' income can be resolved, because in any income generating activities, you need credit or finance, right? And according to us, the right way to handle this, where in normal scenarios or in normal bank lending models or various financial institution lending models which are focused on individuals, a group-led model, which is, the core essence of microfinance, can be leveraged, right, to create that impact and address that, you know, uh, 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 issue of credit on the ground level. So that's what, in simple terms, helping each other is the strategy, right? Drawing on each other's core strength is the strategy, right? Bringing in complementary resources is the strategy, right? And agri startups can really solve for the income generating activity challenge, which normally microfinance institutions face, that whatever they lend, they may not necessarily go to income generated activities, or goes to consumption, which is also fine. At times there are consumption, medical needs, right, or emergency needs. But if it is done for income generated activity, the impact is higher, right? Everybody benefits, right? And collectively, everybody grows, right? So that's the value addition agri startups can do, and that has to be the essence of the partnership model, I would suggest, right? Again, as I said, MFI side, they need to broaden their reach, and agri startup side, they can, help this microfinance institution to maximize the impact of microfinance, right? So what they need to do is, they need to, in their go-to-market model, these agri startups, can think of creating groups, right, like SHGs or JLGs, right, which looking at that group as a customer rather than that individual, right? Or bringing together these individual customers and creating a group, so that tomorrow they can be, given microfinance for the activities which you want to, them to do, right? As I said, like processing, right? That's the approach one should follow, and then create a value chain out of it, right? So agri startups create a group, microfinance brings credit, agri startup create that income generating activities, take that output, process, and take that output to the end market, right? That's the value chain, right? And how that's the value chain which can be oiled by microfinance, right? And this could be the way to, bring in credit and finance to your end user as an agri startup, right? Today that gap is there, right? Not always that value chain is there when microfinance institutions lend, right? So that value chain can be created by this agri startup, right? That's broadly about it, and to simplify, I would say the creation of value chain by agri startup for microfinance institutions is the way microfinance can empower agri startups, right? That's what, I would like to cover in today's session broadly. I hope I have done justice. Uh, uh, Moving forward, we can, look at, so Sanjog, who is the co-founder of Krishifin, right, will dwell into more about how Krishifin is, empowering agri startups through its financing or credit infrastructure, right? Over to Sanjog, I would say. Thank you. Yeah, thank you so much, Vikram sir.
It was very planned and well structured, I must say, the session. You mainly talked about the basics of the microfinance. It's really helpful to the students or who are entering, looking this opportunity into the microfinance. And it's really new to us also, the GLG model. It's a really great initiative that government is taking forward to help the small farmers, I say, and the tenant farmer. So it's going to be help and to tap the opportunities for the agri startups. And you mainly talked about the agri startups, how the microfinance institutions can work together. I think this is the time to really take upon, and seriously, that's the intention to organize the today's session. So it's really a wonderful session. Once again I must say. And yeah, with this, thanks, we will welcome to our second speaker, who are already the agri startups working with the micro entrepreneurs, and it is into the microfinance. So it's a really good combination for the big brother, big brothers, I must say. So I request to my colleague Saurabh, please introduce to second speaker. Thank you. So I welcome Mr. Sanjog Bhavane, founder of Krishifin, and also he is working as a director. Mr. Sanjog Bhavane has a more than 25 years of experience as a Krishifin. He is a co-founder, leading a fintech company dedicated to transforming the financial services industry. With a strong background in finance, Sanjog sir has having experience in the company's innovative solutions and rapid growth. With this short note, I would like to invite him to take over the session. Thank you. Thank you, Saurabh, for the introduction. And thanks, Vikrant, for giving the insight basically of what exactly the microfinance is in perspective of basically the agri entrepreneurs. And thank you, Amit sir, for briefing it what Vikrant has said in a very perfect way, basically in a very short this thing, so that it becomes very simple to understand, like so. Thanks all of you, and thanks Manage for giving us this opportunity to dwell into this aspect of microfinance and basically how the agri startups can gain out of it. So yeah, I welcome everyone, all the attendees into this session. And as introduced, I'm basically Sanjog. We are a managed incubated startup, which is basically into financing the farmers, and the agri-techs are particularly the startups. Okay, so Vikrant, can you just move on to the next slide? Yeah. Okay, so this is just a small video basically which would take you to what overview of what Krishifin does basically. Okay, so yeah, you can start. Okay, so basically I'll just the time video plays, basically I'll explain. Okay, Krishifin is basically a product of Finances Tech Private Limited. Okay, so our company is Finances Tech Private Limited, and our aim is to make credit easy to the farmers as well as the agri-techs. Okay, so Krishifin is one of the product of Finances. Okay, so Krishifin handles basically the farmer financing part of it broadly. Okay, so likewise we aim to have basically a different products under Finances Tech Private Limited. Krishifin is actually an agri-tech agri platform, or agri lending platform. Okay, which basically connects farmers to various financing institutions, including the microfinance institutions basically. So as I told, basically we are incubated by Manage, and also the award winner in Eureka 2022. So we started almost an year back. I mean, exactly an year back. Okay, and we have developed our platform. Basically, one need we are satisfying is the need of financing to the farmer. Okay, basically rural India and particularly the farmer basically. Okay, so this is a tech platform
Okay, what we do is we connect farmers to the banks. As everyone is aware, basically, there are a lot of farmers who do not have access to institutional lending. Okay, there might be a number of reasons for it, that not all banks have the reach in the rural area. Okay, and basically a farmer is still stuck into the lending by the money lenders basically. So we plan to basically bridge this gap uh, on how these farmers can get finance from the institutional lenders like banks and other financing institutions, as I said, including the microfinance companies basically. So Vikrant, next slide. Okay. So what this platform does in nutshell is basically it is very easy. I mean, a farmer through the agri anchors. I mean, we are not a B2C model. So agri anchors is basically the startups who are already present and who have already a farmer base in the rural areas. Okay. So what you do, as Vikrant explained, like say for example, you are an agri startup and ultimately you are accessing finance from various financing institutions. Okay, but your ultimate aim is to help the farmer use your product. Okay, so I mean, it can be a tech product, it can be any product. Okay, so that particular farmer base you already have, right? Either you have recently started or probably you are into it since long time. So what happens is basically ultimately the farmer to whom basically you are presenting your product, which is of use to him, okay, would require credit. Okay, so what happens is you become an anchor, the agri-tech or the agri-startups basically, you become our anchors, and you have your product to be produced to the farmer. In addition to that, you also give them access to lending, finance, okay, through us. Okay, so our platform, we make you as an anchor. Okay, and as an anchor, you onboard the farmers who has the requirement of finance. Okay, various financing requirements. It can be a crop loan, it can be a tractor loan, or whatever. So that, or particularly for your product as well. I mean, if you are trying to produce something or give something to the farmer, he may require credit even for that product what you are presenting to the farmer. So it's basically very easy. I mean, it's very easy that this platform is very easy. You have to just take basic details of the farmer, and this platform makes it. We have the modules which works, the software which actually works and gives the credit and tell the farmer then and there itself that how much eligible, what is this financing eligibility. Okay, so then and there the farmer comes to know, okay boss, I need this much. Okay, good that you can offer me this much. Okay, and ultimately we are connected with the banks. So basically the farmer then and there gets connected to the bank, even if there is no branch in that particular area. And of course through an agri-tech or the agri startup like you guys, some of you might be. Okay, so this is basically a basic thing. Our product is again a plug and play model. Say for example, there is you might have heard of probably certain big basket, for example. Okay, so big basket has a big farmer base. Okay, big basket has a big farmer base, and I'm sorry, actually someone basically in between asked to speak in Hindi, तो मैं अभी हिंदी में स्टार्ट करता हूँ आधा. ओके, तो बिग बास्केट जैसी या काफी ऐसे एग्री 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 टेक और एग्री स्टार्टअप्स होते हैं जो उनके पास में ऑलरेडी फार्मर्स हैं. ओके, तो उनके फार्मर्स को क्रेडिट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, बराबर. तो वो बिग बास्केट हमारे एंकर बन जाते हैं. बिग बास्केट बहुत बड़े हैं, उनके जैसे बेसिकली छोटे 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 स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं जिनके पास में छोटा छोटा फार्मर बेस होगा. ठीक है, जो फार्मर को हेल्प कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के थ्रू, तो वो भी हमारे एंकर बन सकते हैं बेसिकली, और ये सर्विस वो फार्मर को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसमें फायदा ये होता है कि वो फार्मर को तो उनका स्टार्टअप जो काम कर रहा है वो सर्विस तो प्रोवाइड करता ही करता है,
उसके साथ में आप उनको फार्मर को कह सकते हो कि आप आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हो आपके थ्रू। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है बेसिकली कि आपका प्रोडक्ट या आपका जो भी सर्विस है आप दे रहे हो, उसके उसके अलावा आप उनको फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा दे रहे हो। ओके, तो ये वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके लिए, वैल्यू एडिशन हो जाता है फार्मर के लिए। सी अल्टीमेटली अपन एग्रीटेक या एग्री स्टार्टअप कहते हैं तो अपना हर किसी का एक ही गोल होता है कि अपन फार्मर्स को कैसे मदद कर सकते, ठीक है, किस तरीके से उनका जो भी आप सर्विस दे रहे हो उस हिसाब से उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके या उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, राइट। और मैं एक बात कोट करना चाहूंगा जो मैनेज के सीईओ सर्वनंद साहब हमेशा कहते हैं बेसिकली कि सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होता है ना वो फार्मर होता है। वो रिस्क लेता है, ठीक है, तीन मतलब उसके उसका कुछ प्रोड्यूस करने के बावजूद ही फेल होता है, बट फिर भी वो नेक्स्ट ईयर रिस्क लेता है या नेक्स्ट सीजन में रिस्क लेता है, ठीक है। तो हमारा एम ये होना चाहिए अल्टीमेटली एज एन एनेबलर टू बेसिकली दी फार्मिंग कम्युनिटी। सो उसी उसी पहल में आप लोग भी, जो भी आप यहाँ पे एग्रीप्रेनर्स है वो एज वेल एज हम लोग भी उसी पहल के थ्रू हम पहुंचना चाहते हैं फार्मर्स है, आपके द्वारा या आप हमारे द्वारा, वॉट एवर वे इट इज बेसिकली। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो प्लेटफॉर्म बेसिकली कनेक्ट करता है, ठीक है, आपके द्वारा फार्मर्स को फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से। सो ये ब्रॉडली हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। और मतलब अभी फिलहाल हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली हम करना चाहते हैं और हम कहते हैं हर एग्रीप्रेन्योर्स या एग्री स्टार्टअप्स को कि अगर आपका बेस है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और ये सर्विस अल्टीमेटली फार्मर के लिए फ्री है, राइट। आई मीन मैं ये आपको प्लेटफॉर्म दूंगा तो आपको मैं प्लेटफॉर्म मतलब आपको फार्मर से कुछ चार्ज नहीं करना है इसके लिए, ना ही मैं फार्मर से चार्ज करूंगा। अल्टीमेटली ये हम फैसिलिटेट कर रहे हैं फार्मर को बेसिकली। तो ये हमारा एम है। विक्रम, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है, तो इसमें हम काफी चीजें करते हैं। जैसा मैं फार्मर के लिए एक चीज बताया, बैंकों के लिए भी ये बेसिकली ये होता है कि बैंक को भी हर जगह पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बैंक हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है बेसिकली, जो सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। हम लोग बेसिकली प्राइवेसी भी का भी ध्यान देते हैं क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑल दो स्टफ। तो बैंक भी हमारा मॉड्यूल यूज कर सकता है, राइट। मतलब बैंक को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, आई मीन हम लोगों का मॉड्यूल प्लग एंड प्ले मॉड्यूल है, ठीक है। बैंक को लगता है नहीं ठीक है, मुझे मतलब अगर मैं एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स एग्री स्टार्टअप्स के थ्रू अगर मैं फार्मर तक के फिनांस अवेबिलिटी करवा सकता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से बैंक भी ये सोचे कि ठीक है, फिर मुझे हर जगह अपना ब्रांच ओपन करने का जरूरत नहीं है, राइट। अल्टीमेटली ब्रांच ओपन करने का रीजन क्या है कि भाई आप पहुंचो जहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी के थ्रू सभी लोग जानते हैं बेसिकली डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। तो हम बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है बैंक को भी बैंक के लिए भी काम आ सकता है बेसिकली कि वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करे एज कंप्लीट प्लग एंड पे। ये सैस मॉडल मतलब एक प्लेटफॉर्म है, राइट। आप जस्ट इंटीग्रेशन करना है और वो बैंक हमसे जुड़ सकता है बेसिकली। सो ये ऐसे दो तीन चीजें हैं। एक मैंने जैसे कहा कि हम फार्मर्स को हेल्प करना चाहते हैं इंडिविजुअली। दूसरा, बैंक्स के लिए भी ये हेल्पफुल है क्योंकि वो फार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, सप्लाई चेन। आई मीन से फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज किसी बड़े कंपनी या छोटे कंपनी को फाइनेंस करती है। अब वो फाइनेंस बेसिकली वो अल्टीमेटली एक मतलब एक सप्लाई चेन बन गया। से फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट का, राइट। तो उसमें भी सप्लाई चेन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने आपका प्रोड्यूस, फार्मर ने आपको प्रोड्यूस बेच दिया, आप उनका प्रोड्यूस लेके आप किसी और को बेच रहे हो, ठीक है। तो देयर इज अ टाइम लैग, है ना। आप फार्मर को एक एक वक्त पे पेमेंट करोगे और
आप जो आगे बेच रहे हो उनका पेमेंट आपको एक वक्त पे आएगा। तो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दी, तो छोटे टाइम लैग के लिए भी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आज के तारीख में तो नहीं, बट हम एम कर रहे हैं कि हम वो भी बेसिकली टेक्नोलॉजिकली एनेबल कर देगा, ठीक है। तो वो भी बहुत रिसेंटली हो जाएगा। तो वो भी एक वो भी एक सेक्टर है जो हम फिनेंस करना चाहते हैं। अल्टीमेट एम आप समझ गए कि बेसिकली ये एग्री से रिलेटेड ही आइदर फार्मर्स और बैंकर्स और एग्री स्टार्टअप जो जुड़े हुए हैं फार्मर्स से, उनको हेल्प करने की कोशिश इसमें कर रहे हैं हम लोग। एट द सेम टाइम हम बेसिकली अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं, जैसा कंप्लीट प्लेटफॉर्म कोई भी ले सकता है, मतलब बैंक ले सकती है। किसी को केवल चाहिए कि नहीं मुझे ना केवल सोर्सिंग करनी है, ठीक है, कि भाई मुझे केवल फार्मर तक पहुंचना है, प्रोसेसिंग हम कर लेंगे क्रेडिट का, तो वो भी कर सकते हैं, केवल सोर्स कर सकते हैं बेसिक। और दूसरा ये चीज है कि हम इसमें एक कॉल सेंटर टाइप ऑफ अप्रोच भी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि फार्मर से आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो उस वक्त चाहे उसके पास में होगा नहीं, ओके, या फिर उस वक्त वो मतलब आधा ही कंप्लीट कर पाए, जो कि इवन इफ टेक्स 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट लगता है फार्मर को डिटेल्स उसके डिटेल्स भरने में, ठीक है, बट स्टिल उस वक्त भी अगर किसी की जो जर्नी ब्रेक हो जाती है, जो एप्लीकेशन वो करना चाहता है, ठीक है, तो हम हमारा कॉल सेंटर अप्रोच है बेसिकली कि हम कनेक्ट करते हैं फार्मर से। और अल्टीमेटली आप जानते हो वी आर स्टिल नॉट 100% डिजिटल savvy अभी तक। हमको वो पूरी तरह डिजिटल की भले ही अर्बन एरिया में है, लेकिन फार्मर को अभी तक के पूरी तरह डिजिटल होने की आदत पड़ी नहीं है। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन काफी बेसिकली यूजफुल होता है फार्मर के लिए, काफी एक क्या बोलते हैं उसको, एक नजदीकी पैदा करता है बेसिकली वन ऑन। तो इसके लिए हमने कॉल सेंटर अप्रोच भी रखा हुआ है, जो फार्मर से इंटरेक्ट करके उसकी रिक्वायरमेंट अधूरी होगी आपके थ्रू अगर आए होगे तब भी, ठीक है, तो अधूरी होगी तो वो हम उसके वो कॉल सेंटर उसको फुलफिल कर देता है अल्टीमेट विथ एन अल्टीमेट एम कि उसको जो चाहिए काफी हद तक के हम उसको मदद कर सकें। सो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है, ये टेक्नोलॉजी मतलब अलग अलग टेक स्टैक्स है बेसिकली, और टेक मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली फार्मर को क्रेडिट रिक्वायरमेंट फार्मर की कंप्लीट कर सकता है आप जैसे एग्री स्टार्टअप्स एग्रीप्रेनर्स के थ्रू बेसिकली। विक्रांत। यस, सो जैसे मैंने कहा कि पहले माइक्रो फाइनेंस और एग्री स्टार्टअप जुड़ सकते हैं, राइट? वैसे ही हम लोग भी एग्री स्टार्टअप्स के साथ जुड़ सकते हैं टू इनेबल फार्मर्स, उनके फार्मर्स को फाइनेंस इनेबल करने के लिए, राइट? दैट्स द अल्टीमेट एम, आई वुड लाइक टू से. I think that's it from our side, Amit sir. Again, I would thank on behalf of both of us and Team Krishifin Yeah. for to manage and particularly manage CI to give us this opportunity. Correct. And now I think there were people who had questions basically. So जिनको भी कोई भी सवाल हो, मतलब नॉट एक तो ये टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर अदरवाइज भी एंटरप्रेन्योरशिप और पर्टिकुलरली एग्री एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप प्लीज फील फ्री टू आई मीन आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। Yes, yes. You can put the questions in chat box or you can directly raise the hands. We will take one at one. So before that, sir, few participants are requested if you can play a mock of your app. So meanwhile, they will put their questions in the chat box. Mock up of any your. So mock won't be ready, but we can play the video again to give an idea of the features Yeah, it could of the help product. once again. The some participants are requesting again. So अच्छा, it will give idea about what the Yeah, facility. we'll play the video again. It will give a broad idea of what our application does, right? Sure. What that By does. the time I request to the participants, kindly put your questions in the chat box. You may raise the hands directly, ask questions to the speakers. Okay, I'll share my screen again. Yeah. Is my screen visible? yeah, Yes, yeah. sir. Okay. So this video broadly gives the features of our product, what it does. It's very simple. It's for we have kept it very, very simple for the farmer, to be onboarded, right? So I'll just play the video. It will give a broad idea of what the product does, what are the features, right?
And if any agri startups want to partner with us, they need a demo and want to understand how we can work together, right? I think we can talk separately. We can schedule a meeting and talk separately, right? Yeah. तो ये So I just वीडियो मतलब बेसिकली आप देख रहे हो तो इसमें इंग्लिश इज द थिंग बट वी हैव इट इन 3 लैंग्वेजेस आई मीन इंग्लिश हिंदी एंड मराठी सो as of now, yes. या तो ये बेसिकली क्या है कि ये जैसा आप देख रहे हो इट्स बेसिकली वेब ऐप यहाँ पे अगर आप कस्टमर हो तो कस्टमर से एंट्री कर सकते हो ठीक है जहाँ पे देख रहे हैं और दूसरा अगर आप एग्री एंकर हो आपके थ्रू कस्टमर आ रहे हो तो आपको एक क्रेडेंशियल दिया जाता है आपके थ्रू आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं ठीक है तो इसमें बेसिकली बहुत ही सिंपल चीजें है मतलब कस्टमर का केवाईसी सो केवाईसी इज बेसिकली आइदर उनका जो भी मतलब वोटर आईडी या आधार या जो भी है तो उनका केवाईसी करते हैं बेसिकली और केवाईसी करने के बाद में भाई आपको कौन सा लोन चाहिए उसका ड्रॉप डाउन है कितना लोन चाहिए और आपका लैंड रिकॉर्ड बस ये 3-4 पेजेस के अलावा इसमें है कुछ नहीं ठीक है और फिर ये सिस्टम पूरा कैलकुलेट करता है कि वो ऑन अ रियल टाइम बेसिस कि उनका एलिजिबिलिटी क्या बनता है तो आप देन एंड देयर वहां पे कर सकते हो तो इट्स बेसिकली फ्रंट एंड देखोगे आप इसका ऐप का फ्रंट एंड देखोगे तो बड़ा सिंपल है ठीक है ये पूरा कैलकुलेशन जो हो रहा है वो सॉफ्टवेयर कर रहा है बैकएंड में कर रहा है बेसिकली ठीक है सो दैट इज तो ये अब किसी भी एप्लीकेशन देखो आप कोई भी आप एंटर नेम भी नहीं होता है इसमें इनफैक्ट केवाईसी से ही नेम आ जाता है उनका तो केवल लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है कौन सा लोन चाहिए कितनी बस रिक्वायरमेंट है एक पेज है और दूसरा पेज आपके लैंड कौन से दैट्स इट तो इसके हमने अलावा बेसिकली बहुत सिंपल रखा है और किसी को पर्टिकुलरली डेमो चाहिए जो एग्री स्टार्टअप जोड़ना चाहता है तो ऑलरेडी अमित सर ने हमारी ईमेल आईडी शेयर की है प्लीज गेट इन टच विथ अस राइट एंड वी कैन सी हाउ वी कैन वर्क टुगेदर Definitely, definitely. And after the end of the session, also we are going to share the presentation and the contact details of the speakers, those who are registered participants, so you may connect. Also, if you have missed some part, YouTube link and all links are available on our website and YouTube channel as well. So that through that also you can get connects. So yeah, we will let's move to our next session part of the webinar, that is the question and answer. So I have noted few questions. The first very question I will take from the Ravi. I think it's seems to be very more important and will clear more idea about the Krishifin. So Ravi sir wants to know how is the credit limit is defined and what is the maximum credit farmers can obtain through your platform. So how so exactly the basically works? credit limit sir is a function of क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होता है कि क्या एंड एक्टिविटी है फॉर व्हाट द क्रेडिट इज गोइंग टू बी यूज फॉर एग्जांपल अभी एक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहा है विच इज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राइट अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यू कैन क्रिएट अ प्रोसेसिंग यूनिट राइट यू कैन क्रिएट अ ग्रेडिंग यूनिट you can create a storage unit right based on the guidelines of this agri infrastructure fund for this particular projects right the credit limit based on what is the size of that unit right and things like that the credit limit is decided that is one example of as I said agri infrastructure so basically जो end use है what depending on what is the end use अगर क्रॉप लोन हो तो वर्किंग कैपिटल वो क्रॉप लोन का क्या है राइट व्हाट इज द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर दैट क्रॉप लोन व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ नाबार्ड्स टुवर्ड्स दैट उसके बेसिस पे क्रेडिट लिमिट डिफाइंड होता है राइट और मैक्सिमम देखा जाए तो ऐसा कुछ देयर इज नो मैक्सिमम डिफाइंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन एंड यूज अगर बहुत बड़ा लोन है तो कोलेटरल क्या है राइट व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ दैट फार्मर or that individual who is taking that credit right उसके ऊपर डिपेंड करता है Yeah, I hope Ravi you got the answer. Yeah. for example agri infra fund में up to 2 crores they have kept it as per the government guideline collateral free right it is guaranteed under a different scheme right so वैसे कुछ benchmarks defined है कुछ कुछ schemes में there are some benchmark defined in some of the schemes right it is the maximum maybe according to in some of the schemes there will be some maximum caps also Yeah, okay. Yeah, Ravi got the answer. He acknowledged it also. We can see in the participants, Mr. Purushottam sir has raised his hand.
Purushottam sir, can you hear me? Mr. Purushottam Kumar sir, can you hear me? Hello. Purushottam sir, can you hear me? I have unmute you, sir. You can ask the question directly to the speaker. Yes, sir. Hello. Next छोड़ देते हैं बाद में. Yeah, no issue. We'll take the next question. Mr. Dhananjay has raised his hand. Dhananjay, can you hear me? Hello. सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही आवाज है धनंजय जी, बोलिए। अच्छा सर, बड़ा आपका ये बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा के अंदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ पर जो है किसान और किसान समूह और गवर्नमेंट के साथ लिंक करने के लिए बिजनेस के कुछ लोगों को आउटसोर्सिंग में लगाया हुआ है। तो कैसे आपका जो एप्लीकेशन है, इंटरफेस है, वो फार्मर की भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी और जो इंटरफेस एजेंसी है उनकी मदद कर सकता है? क्या ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस है हरियाणा में? और हरियाणा में नहीं तो शायद महाराष्ट्र में हो। तो बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और यही हम करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो कि आज एक फार्मर को एक संस्था से जोड़ने के लिए, भले वो गवर्नमेंट संस्था हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कोई संस्था से जोड़ने के लिए, यदि वो गवर्नमेंट संस्था हो या वित्तीय संस्था हो, राइट, तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, राइट। अभी तक तो हमने गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी पहल नहीं की है, बट ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चाहती है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, राइट, कि वो किस तरह फार्मर्स को ऑनबोर्ड कर पाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जोड़ने के लिए, राइट, तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, राइट, हम करना चाहेंगे ये, यही तो हमारा उद्देश्य है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप जब एग्री फिनटेक की बात करते हैं तो आप किसान से जमीन से संबंधित उसके डाटा लेते हैं, पर ढेरों किसान ऐसे हैं जो कि लैंडलेस हैं और जो अपना पशुपालन का काम कर रहे हैं, मशरूम का काम कर रहे हैं या ऐसे किसी और की जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो कैसे? और उनको सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस की जरूरत है, वो इधर उधर भटकते भी रहते हैं। तो कैसे आपके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं या आपके माध्यम में इस तरह का उन लोगों के लिए भी कोई प्रोविजन है क्या? राइट, सो धरेन जी, आज के टॉपिक के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिकॉज आज का टॉपिक उसी पर जुड़ा हुआ है, माइक्रो फाइनेंस, राइट। और आपने जैसा सही कहा कि बहुत सारे फार्मर के पास जमीन नहीं रहती है, राइट, वो अलाइड एक्टिविटीज करते हैं, कोई डेयरी करता है, कोई मशरूम यूनिट करता है, राइट। तो इसके लिए ये माइक्रो फाइनेंस का जेएलजी मॉडल, राइट, ये बहुत ही रिलेवेंट मॉडल है और ये हमने लाना चाहिए इसमें, राइट। और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं चाहती है कि वो इनकम जनरेट एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस दे, राइट। और इसीलिए हमने भी आज के टॉपिक में देखा कि कैसे इन वैल्यू चेन को माइक्रो फाइनेंस से जोड़ा जा सकता है। हमारे एप्लीकेशन में आज के तारीख में हमने अभी तक तो एग्री और फार्मर एज ए इंडिविजुअल पे फोकस किया हुआ है, राइट। बट आई वुड से थैंक्स टू मैनेज, उन्होंने ये सोचा कि माइक्रो फाइनेंस भी कैसे इसमें ला सकते हैं। और अभी हम भी ये पढ़ लेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आज हमने अगर बाकी वित्तीय संस्था को लाया है तो माइक्रो फाइनेंस भी एक वित्तीय संस्था ही है, उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और ये जो आपने कहा कि इन फार्मर्स को लोन की जो रिक्वायरमेंट होती है ये पूरी कर सकती है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है धनंजय। I hope you got the answer. And aligned to the same question, there was one question is coming from the Bishwajit.
that he's asking that does your application do the due diligence or any eligibility before sending farmers applications to the bank, or just you generate the demand and passing to the bank? No, So we do the clear due that. diligence, वैल्यू एडिशन करते हैं हम। वरना कि एक एप्लीकेशन आया और पास ऑन कर दिया तो वैल्यू एडिशन नहीं वैल्यू है, एडिशन राइट? कुछ नहीं। तो वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम ड्यू डिलिजेंस ड्यू करते हैं डिलिजेंस और भी भेजते होता है हैं। वो पूरा मतलब जो इट हम इज लोगों नॉट ने जस्ट, बैकएंड में यानी क्रिएट। ड्यू डिलिजेंस एक तो पार्ट है, बट कैसा है कि वित्तीय संस्थानों को भी उन वो जो एप्लीकेशन देखती है वो एक पर्टिकुलर तरीके से चाहिए रहती है, राइट? Yes. सो वो हम इनेबल कर पाते हैं। ड्यू डिलिजेंस तो एक बेसिक पार्ट है। सो इन सिंपल लैंग्वेज कि जो फार्मर्स को बार बार बैंक जाना पड़ता है, उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, सो इजी टू एक्सेस, जो बैंक नंबर ऑफ कस्टमर्स को हैंडल करता है, फार्मर को भी तकलीफ होता है, सो वो दैट वर्क कृषिफिन मेक्स द सिंपलर. But of course, करेक्ट। due diligence part is involved. So I think Biswajit, you got the answer of your question. And there are two requirements are coming from the participants, sir, for your startup. Actually, Rajneesh is working with a seed company and he has associated more than 6,000 farmers. And he's looking to provide this microfinance to the farmers. So Rajneesh, already the details of speakers we already mentioned in the chat box. Also, we will send the email details to you. And Yeah, I have one more, noted Sure, sure. Rajesh, point also, and his email ID. Jajnish will get in touch with you. Thank you. yeah, and one more requirement is coming from the Gutappa B.S. Sajan. So he is a farmer, can avail loan or the credit from the Krishifin, who is having 7 acres of red gram and 7 acres of the maize. So I think, yeah, you already cleared it. So, sir, you can also be in touch with the Krishifin. They will definitely try to help you out. Yes, correct. Yes. Okay, so I can see in the attendees one more hand is raised by Dr. Shubhrata. Saurabh, can you unmute Dr. Shubhrata? Hello? Yeah, Dr. Shubhrata, can you hear me? एक छोटी सी सवाल है। जी बोलिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज 2003 से शुरू हुआ, आज 2023 हो रहा है। 8,000 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हमारे इंडिया में हुआ है। अभी सर यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज बड़ा ही कम है, और भी 10,000 होने वाले हैं। तो ये जो सर जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्लान, नंबर 1। नंबर 2, सही कैप्टन्स। अगर अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाता है तो फिनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग, इसके ऊपर सर क्या क्या सपोर्ट है, ये अगर थोड़ा सा एनलाइटन करे। थैंक यू। Right. So, डॉक्टर चक्रवर्ती, बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि क्या सपोर्ट है और आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, राइट? अगेन मैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे जाऊंगा, बिकॉज काफी एफपीओस फोकस्ड है प्रोसेसिंग या प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी या स्टोरेज या बाइंग ऑफ, कलेक्टिवली बाइंग ऑफ आउटपुट एंड सेलिंग इट टू द एंड यूजर, राइट? तो इसमें AIF जो स्कीम बनी है ये बड़ी अच्छी स्कीम बनी है सर। और इसमें आप अगर देखोगे उन्होंने पूरे मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिए हुए हैं अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, राइट? जो अगर आप मुझे पूछे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतनी डिटेल में गाइडलाइंस के साथ मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आई है DPRs के तरह, राइट? सो ये रेडीली अवेलेबल है, right? Based on the activity, you can take those DPRs, right, and prepare your own project report. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल जो एक एक व्यक्ति जिसको थोड़ी फाइनेंस की समझ है, बी इट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, वो
इसमें डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है। काफी एफपीओ जब रजिस्टर होती है ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है कोई आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बिकॉज उनके फाइनेंस या ऑडिट रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, राइट। अगर उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये डीपीआर के फॉर्मेट दिए गए, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर देम टू प्रिपेयर, राइट। एंड ये डीपीआर के फॉर्मेट गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज करके दिए हैं और यही यूज कर सकते हैं सर। एंड टू ऐड टू विक्रांत ने जो कहा बेसिकली, और मैनेज जैसे इंस्टीट्यूट्स, ओके, ये भी यही पहल कर रही है। ओके, इनके काफी ट्रेनिंग्स के थ्रू ये मैनेज जैसे इंस्टीट्यूट्स यही पहल कर रही है कि फार्मर्स को या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मदद कर सके। से फॉर एग्जांपल काफी अच्छे से फिनांस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ट्रेनिंग के थ्रू फाइनेंस अपना मैनेज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस दे रही है बेसिकली। इसमें दिक्कत क्या है जो मैं देख रहा हूँ, वो कि अवेयरनेस नहीं है। आई मीन आप कहे तो इंफॉर्मेशन काफी है, बट जिनको जिसको बनाना है उनके पास में अवेयरनेस कैंपेन्स और अवेयरनेस पहुंचाना ये बहुत बड़ी चीज है बेसिकली। अगर वो पहुंच जाती है तो जो आपको लग रहा है कि वो अभी तक के उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कुछ पार्ट में ये चीज भी मदद कर सकती है। आई मीन Exactly. I think Dr. Subrata ji, you got the answer. Very simply, they mentioned and talked about the AIF. And also, Manage is running this scheme also, AIF through our institutions. So you can be in touch with our institutions also to get the more idea about AIF as well. Moving forward, sir, there is one question is coming again and again, and also I had noted that question from my end as well. How these interest are being charged by the banks? It is related with the repo rates, and what will be the additional service charges they need to pay if they are coming from your digital platform? If you can give a little bit idea on this. सो इंटरेस्ट रेट्स जैसे कि क्रॉप लोन या केसीसी स्कीम में रेगुलेटेड है। सो अप टू 3 lakhs इंटरेस्ट सबवेंशन है। 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इफ इट इज पेड ऑन टाइम, राइट, रेगुलरली पे किया जाता है, तो एज पर द करंट सर्कुलर देर इज अ 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, राइट। तो आपको नेट नेट 4% में मिलता है। 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, यानी, राइट। तो वैसा है केसीसी में, राइट। एआईएफ में भी आप देखेंगे तो देर इज अ इंटरेस्ट सबवेंशन, वहाँ भी अराउंड 8 to 9% करेंटली बेस्ड ऑन द रेपो रेट एज यू सेड। एआईएफ में आज की तारीख में है, और उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। तो उस तरह से। और बाकी जो जनरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ट्रैक्टर लोन हो गया या फिर माइक्रो फाइनेंस हो गया, ये मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट्स है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, हर एक बैंक अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट रखती है, राइट, बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट ऑफ फंड और कंपटीशन के हिसाब से। और ऑब्वियसली फाइनली तो एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फंड इज लिंक्ड टू the rates driven by RBI, which is repo rate and all. और एडिशन टू द अनदर क्वेश्चन विद हाफ आंसर्ड, हाफ इज बेसिकली सर्विस चार्ज। तो हम लोगों ने पहले ही बताया कि बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग फार्मर्स को, तो हम फार्मर्स से कोई चार्ज नहीं करते इसके लिए। ओके, ऑब्वियसली आई कैन नॉट बर्डन फार्मर्स फॉर चार्जिंग, मतलब मैं उनको चार्ज नहीं कर सकता, तो नहीं, मतलब दिस इज टू फैसिलिटेट द फार्मर। इसमें फार्मर को कोई सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है इफ ही यूजेस और यू यूज थ्रू यू, आपके द्वारा अगर फार्मर ये प्लेटफॉर्म यूज करता है। Yes, so that's the intention. Manage is also supported your startup, sir, that you are doing a good job for the farmers, and yeah, you are connecting the farmers with the financial institutions. One question I missed it in the between, but is your startup is funded by any bank or any other way? That's he wants to know, sir. If you can talk about it. As of now, no. I think we are not. I think we are definitely part of the RKVY-RAFTAAR program, right? That's the one cohort which we are part of currently. Yes, sir. So yeah, under RKVY, they got selected on the pre-seed stage, but seems to be traction very soon. They are going to be next stage level, sir. We are wishes with you. The time is running. I quickly take the one of the question coming from the Prashant Dikar. He's asking, sir, that how a new startup can avail this loan or the credit facility through your startup. Means what will be the way, as you already explained, but he's asking again if you can shortly you can explain him.
See, any new startup first needs to basically what should be the way in this is like what also happened in our case, right? So there is a RKVY-RAFTAAR AOP program which under which you can get the initial funding. Okay, so I will suggest to take that route of participating in RKVY-RAFTAAR, take the initial small fund, create your startup, create some minimum viable product, enter into the market, right? Create some value, right? And then go for the next level of funding, right? There are various funding schemes for startups, right? Again, to the RKVY-RAFTAAR, the next level you can take into the SAIP program. That could be the next level of funding, right? And once you grow a little more, you can be ready for taking various kind of loans from various financial institutions, right? There is a scheme for startups also, right, where they can fund it, right? But there has to be a little bit more established. Initial part, I will suggest if you are an agri startup to take the RKVY-RAFTAAR AOP route, right? And if you are successful to take that, and after that you can go to next level, which is SAIP also. अर्लियर Exactly. बेसिकली यस, हाँ वही है कि अर्ली स्टेज अगर आप स्टार्टअप होने तो छोटा स्टार्ट करो, ठीक है, बहुत बड़ा मत स्टार्ट करो, ठीक है, छोटा स्टार्ट टेस्ट करो, ठीक है, और बहुत छोटा स्टार्ट कर रहे हो आपको तो आपको बेसिकली यू डोंट नीड बेसिक वेरी बिग फंडिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज आई हैव सीन बेसिकली हाउ मैनेज इज सपोर्टिंग बेसिकली स्मॉल स्मॉल, मतलब इवन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, ओके यू स्टार्ट स्मॉल, है ना, मतलब गैरेज में चालू कर दो, ठीक है, तो उसमें आपको यू डोंट नीड फंडिंग, यू नो लाइक आप फिर जैसा जैसा आप बढ़ते हो तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास में आएंगे पैसा देने, Absolutely. so that is, I mean, just This is also our advice from the managed side to the budding agripreneurs and agri startups. Take benefit of the government is actually supporting in many ways. Different schemes are there, like we are running RKVY-RAFTAAR program under Ministry of Agriculture. Those startups who are at early stage, they can avail 5 lakh rupees of the granting, like Krishifin is there. Those who are already in the market, they need scale funding, they can go for the SAIP program, that is for the 25 lakhs. And not only for the RKVY, but Niti Aayog, MSME, DST, many ministries, they are coming with a very good grants. If you are not in agri but in other domain, you can go with this grant, and then you can look for the debt and equity based funding, which is next level. So to get good benefit and to avoid more capital expense in your business, you start with a small baby steps and then go for these taking the equity and debt. So yeah, the time is already over, and still I can see many hands are raising up, but due to time we cannot able to take more questions. But yeah, definitely the speakers details we have put in the chat box. You can reach the speakers anytime. You can reach to yes, manage yes. also. We will passing these questions to them. They definitely try to solve your questions and queries. So Of before course. we are ending this webinar, I would like to give one announcement that Manages has organized his fifth batch of digital marketing. So along with the finance, digital marketing is also very important to make your digital presence. So that sort of online training applications we have opened. Their links are already in the chat box. You can register that program. The date of the application is last 30th of this month, 30th of September. Along with that, we have put our social media links also in the chat box. So where you can get the regular updates of our training programs and upcoming events. And the most important part of the today's discussion, the EIF scheme, the details of the managed link also have shared in the chat box. You can go and you can check the details about the EIF scheme as well. And last but not in the least, in the link, the feedback, which is very important to know us from your end, what you feel about the today's webinar, and also which are the topics you want to hear from us in the next upcoming webinars. We will like to definitely add your values. So with this note, I would once again thank you to Vikram sir and Sanjog sir. In a very short time, you accepted our invitation and deliver very wonderful session. Always there, sir, always there. Yeah, and all the participants, you asked very good questions, relevant questions, and thank you for being with us, and my team also for organizing this webinar. Thank you all. See you in the Thank next. you. Thank you, team Thank manage. you. Thank you, Thank you. participants. Thank Thank you. you. Thank you. Bye bye.